Good morning students. Hope all of you are fine. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 10, Weather, Climate and Adaptations. So let's start. All of you know weather and climate, सबने पढ़ा होगा previous classes में. So weather is a condition of atmosphere over a short period of time. Day to day climatic conditions are known as weather, and this weather changes every day. This is for very short period of time, maybe a single day or two we can say. जो आप everyday टीवी में रिपोर्ट देखते हैं that is weather report. आती है ना टीवी में, जब न्यूज़ आती है तो उसके बाद आता है weather report. So that weather report is day to day weather report. And if you talk about climate, the condition of atmosphere over relatively long time period. अगर हम किसी पर्टिकुलर हम जब क्लाइमेट देखते हैं तो वी सी द क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और ए पर्टिकुलर स्टेट. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक सिटी का टेम्परेचर देख रहे हैं. नो, इट इज़ फॉर अ लार्जर एरिया वी कैन से, एंड वेदर इज़ फॉर स्मॉल एरिया. सो जब हम क्लाइमेट देखते हैं इट इज़ फॉर ए स्टेट और ए कंट्री, एंड मिनिमम 25 ईयर्स का एक्यूरेट, जो हमारी रीडिंग्स अगर एक्यूरेट लेनी है हमें, so we have to consider the weather of a particular place for over 25 years. तो उसका जो क्लाइमेट है वो पिछले 25 ईयर्स में कैसा रहा है वो सारा एवरेज निकाल के then we find out the climate of a particular region we can say. And this climate, this does not changes very rapidly we can say, and this weather it changes very frequently. Now what are the different elements of weather? अब हमें पता कैसे चलता है वेदर के कौन कौन से एलिमेंट हैं. टेम्परेचर, ऑन बेसिस ऑफ विच वी कंसीडर अवर वेदर और क्लाइमेट. टेम्परेचर, विंड, प्रेशर, रेन एंड ह्यूमिडिटी. अब इस पर्टिकुलर एरिया का अगर हम क्लाइमेट या वेदर देखते हैं तो वी हैव टू कंसीडर ऑल दीज थिंग्स ऑल टुगेदर टू फाइंड आउट द क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया. First we will talk about temperature. Temperature, all of you know, in the morning the temperature is maximum and in the afternoon it is minimum. सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है? आफ्टरनून में. और मॉर्निंग में देखें तो टेम्परेचर इज स्टिल ओके. अब समर्स हैं तो मॉर्निंग में फिर भी वेदर ठीक होता है, लेकिन जैसे जैसे आफ्टरनून आता है एट 12 o'clock और 2 o'clock इट इज़ वेरी हॉट. सो दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी. टेम्परेचर किससे मेज़र करते हैं हम? थर्मामीटर से. ऑल ऑफ यू नो थर्मामीटर. फीवर होता है तो क्या लगाते हैं हम? यूज़ करते हैं थर्मामीटर टू मेज़र अ टेम्परेचर और फीवर वी कैन से. सो नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी थर्मामीटर ही यूज़ होता है फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर. देन वी हैव विंड. विंड, ऑल ऑफ यू नो, द ब्लोइंग एयर इज नोन एज, द मूविंग एयर इज नोन एज विंड. विंड किससे मेजर करते हैं हम? एनीमोमीटर. देयर इज अ डिवाइस नोन एज एनीमोमीटर. Then pressure, all of you know air exert pressure. So a lot of air is present in the atmosphere, so atmospheric pressure. Here we are talking about pressure exerted by the air, so that is atmospheric pressure. This atmospheric pressure is measured with the help of barometer. Then we have rainfall. Rainfall आप सबको पता है, precipitation, that is rainfall. So rain किससे मेजर करते हैं हम? with the help of rain gauge. Then we have humidity. The amount of water vapors present in the air is known as humidity. देखा होगा रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, चिपचिपा मौसम हो जाता है, that is humidity, because the moisture content in the air increases. So that is known as humidity. And humidity is measured with the help of hygrometer. Now we will start with adaptations. Adaptation is defined as a change in structure, function or form that improves the chances of survival of an animal or plant within a given environment. Now what is adaptation? कोई भी चेंज किसी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, फंक्शन या उसकी फॉर्म में जिसकी हेल्प से वो पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर पाए. दैट हेल्प हिम और इन सर्वाइविंग ए पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन. सपोज हम डॉग है जो प्लेन एरिया में रहता है, उसे माउंटेन्स में जाके छोड़ दें, सो दैट डॉग इज गोइंग टू सर्वाइव देयर? नो, ही विल डाई बिकॉज देयर टेम्परेचर इज वेरी लो.
तो वहाँ पे क्या है, बहुत कोल्ड कंडीशन है, तो यहाँ वाला डॉग वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज द डॉग्स प्रेजेंट इन हिली एरियाज दे हैव लॉन्ग हेयर्स and a fat layer inside their body that help those animals to survive them in colder regions. So every human being or plants or animals, they are adapted according to their environment, and that is known as adaptation. First we will talk about adaptations of the animals that live in polar regions. Polar regions, all of you know, Arctic and Antarctic region are known as polar region. In Antarctic region, the temperature in winter is -89 degree Celsius. देखिए अब कितनी ठंड होती है वहाँ पे. It is -89 degree Celsius in winter and -30 degree Celsius in summer. So यहाँ पे normally सिर्फ क्या होते हैं, mostly इट इज़ वेरी स्पार्शली पॉपुलेटेड. ह्यूमन बींग्स की तो कोई पॉपुलेशन है ही नहीं अंटार्कटिका में, वहाँ पे सिर्फ कुछ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट आर्टिक रीजन, इन आर्टिक रीजन देर इज इट इज़ स्पार्शली पॉपुलेटेड आर्टिक रीजन. सो migration is one of the most prominent feature that we see in the animals or birds that live in polar region. Migration. Now what is migration? Moving away from a particular region to another region to survive cold conditions. Normally वहाँ के जो animals होते हैं वो क्या करते हैं, colder regions में basically birds they fly to warmer places. Normally Siberian crane रशिया में रहता है. It comes to India in Haryana and Rajasthan to survive the harsh winters in Russia. वहाँ से उस टाइम ये इंडिया में आ जाते हैं. दे फ्लाई बैक टू इंडिया एंड व्हेन विंटर स्टार्ट्स इन इंडिया इट गोज बैक टू साइबेरिया. दैट इज साइबेरियन क्रेन, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ माइग्रेशन. सो माइग्रेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू migrate to another place to survive the harsh weather conditions, we can say, particularly winter. Now we will start with adaptation of polar bear. The first adaptation of polar bear, they have a dense and white fur. Dense fur help them to protect, उनका fur क्या होता है, बहुत ही dense होता है, and that help in protecting them from cold, and their fur is white in color, so that is camouflage basically, so that they can easily blend with their surrounding and save themselves from predators. Then second adaptation is they have thick layer of fat. Inside below their skin they have a thick layer of fat that is 11 centimeter thick that protect them from cold. Then they have short ears to avoid heat loss, and their feet they have soft bumps for traction on ice, ताकि जो उनकी आइस पे ग्रिप बन सके, इसलिए क्या होते हैं उनके जो फीट होते हैं उन पे सॉफ्ट बम्प्स होते हैं. Then these are very good swimmers. These polar bears, they are very good swimmers and they can swim up to the speed of 100 km per hour. Then one property is also exhibited by these polar bears, that is hibernation. Hibernation means sleeping in winters. They eat extra food in summers तो होती ही नहीं है वहाँ पे. When temperature is somewhat कह सकते हैं कि थोड़ा सा ठीक होता है -30 डिग्री सेल्सियस, at that time they eat a lot of food to, and और क्या बना लेते हैं वो फैट लेयर जो होती है वो उनकी हेल्प करती है at the time of extreme winters, and they get energy from that fat layer basically. That is hibernation. Then adaptations of penguins. Penguins आप सबने देखा होगा, penguins they are flightless birds. They have wings but they cannot fly, they are birds. So first adaptation is they cannot fly but they are very good swimmers. वो fly नहीं कर सकते but they are good swimmers. Good swimmers, that's why they have streamlined body and webbed feet. Their streamlined body and webbed feet help them in swimming. Then their fat layer is 3 centimeter thick, help in protecting them from cold, and this layer is known as blubber. Then their feathers are stiff and lightly packed and act as coat to save them from cold or rain basically.
and they huddle together. Normally the penguins, they live in a group and they huddle together on each other so that they will remain warm, and they have solid bones. Normally birds की कैसी होती हैं bones? They have hollow bones, but these penguins, they have solid bones. These bones help them to swim in water. So these are the few adaptations of penguins and the animals, polar bear and penguins that live in polar regions. Now we will discuss about the adaptations of the desert region. All of you know deserts. Deserts are very hot. They are hot in daytime and the nights are cooler because क्योंकि जो sand होती है वो बहुत जल्दी cool भी हो जाती है. So days are hot and nights are cooler, and in desert there is scarcity of water. So all adaptations are for water and heat, we can say. So first we will discuss the adaptation of desert plants. Most of the plants in deserts, most of the plants belong to cacti family. Cacti family is a family in which plants are succulent and have spines. Now why these plants have spines? Their leaves are modified into spines to avoid loss of water through transpiration, and their stem and leaves are succulent. Succulent means water is stored either in leaves or in stems, so they are fleshy, and the stems of desert plants are green in color. They have green stems because जो लीव्स होती हैं वो तो स्पाइंस में चेंज हो जाती हैं, तो फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करेगा? Stems are green to perform photosynthesis, and the root system is well developed root system. जो वाटर टेबल होता है वो बहुत ही कहाँ होगा? That is very low. That's why their root system is very well developed, because they have to penetrate deep inside the soil to get the water. So these are the few adaptations of desert plants. In next video we will discuss about the adaptation of desert animal. Thank you.